Yes, first case was that is the vertical plane of symmetry. Vertical plane of symmetry is passing through the midpoint perpendicularly across the battery. So अगर किसी को कैपेसिटर वाले कॉन्सेप्ट याद नहीं है, आप एक बार वहां से रिवाइज करेंगे and we will do directly do the examples. So पहला एग्जांपल किया था हमने, that was the case in which there is a junction lying on plane of symmetry. Right, so between A and B we have to find the equivalent resistance. Each resistance is R. Calculate the value of equivalent resistance. So वैसे तो हमने वहां पे किया था, पहले बैटरी आके देखते हैं, but now since we already know जिन पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं उन पॉइंट में बीच में बैटरी लगाएंगे. There is the battery V, and if we use this plane of symmetry, every point lying on this plane of symmetry is its same potential. So these junctions can be opened along the plane of symmetry. Circuit will remain unchanged. So this will become the yes. What is the answer? Calculate the equivalent resistance between A and B. Yes. What is the answer between A and B? What is the equivalent resistance between A and B? I am not going to solve because we have already done this. Friends, सर मैं कर रहा हूँ सॉल्व. अच्छा ठीक है. Any junction lying on plane of symmetry will be open and it can be shifted along the plane of symmetry. So ये R and R become in series 2R and in parallel with R, R1 R2 divided by R1 plus R2. So this part will become 2R by 3. 2R by 3 and R in series. So ये कैसे पैरेलल हुआ? हाँ बेटा, ये सीरीज नहीं होगा R और R. No, R and R will be in series. अच्छा हाँ यस सर. नीचे वाले R and R R will be in series. आएंगे और वो ऊपर वाले R के साथ पैरेलल. Right? So ये 2R by 3, R and R in series become 8R by 3. नीचे से 8R by 3 और बीच वाले ब्रांच में आ गया 2R. आरएन रिवाइज किया आपने कैपेसिटर वाले सर्किट्स? I asked you to revise the cases of capacitor circuit. So ये बन गया 8R by 3, 8R by 3 और बीच वाला 2R. All same pattern. Calculate the R equivalent. 3 upon 8R plus 1 upon 2R plus 3 upon 8R. सर 7/6. 3/6 कैसे? अच्छा 3 नहीं plus 4 plus 8 become 10 by 8R. So R equivalent is 8R by 10, which is 4R by 5. yes. Hmm.
डन। दूसरा केस कहता है किसी प्लेन ऑफ सिमेट्री पे अगर कोई रेजिस्टर ही लाई करे, the whole resistance lie on the plane of symmetry. Yes, calculate the resistance between A and B in the following. If it is, each resistance is R. Calculate. Again, there is a plane of symmetry. तो इसमें दोनों चीजें हैं. There are two resistors also lying in this plane of symmetry, and there are two junction also lying on plane of symmetry. The resistor lying on plane of symmetry is removed, and junction lying on plane of symmetry is opened and shifted along. If there is any resistor lying on plane of symmetry, because it does not have any current through it, potential at the terminal will be equal. That will be removed from the circuit. So ये बीच वाला हटेगा ना यार? ये वर्टिकल वाले दोनों और हट जाएंगे. तो तो सेम ही नहीं आएगा रेजिस्टेंस पिछले वाला. सर्किट डिफरेंट है. सर्किट इज नॉट एग्जैक्टली सेम. 2R. ऊपर R और R दो सीरीज में, पिछले वाले में ऊपर केवल एक R था. In this there was only one R, and here there are two R will be in series. Aman? Yes sir, yes sir. This will be the final circuit. So here R, 2R, R, 2R, 2R, 2R parallel फिर में R. 6R by 7 आ रहा है. 7th R by 6. अच्छा इन्वर्स कर दिया नहीं. ये ऊपर का आ जाएगा 3R, नीचे का भी आएगा 3R, because this is 2R and 2R in parallel R. R in series. It will become 3R. Central one is 2R and lower also 3R. कितना? 6R by 7. 6R by 7. Yes sir, 6R by 7. Second case क्या था? What was the second special case? Horizontal plane of symmetry. Second case was when there is a horizontal. Abda? Sir, folding method. Folding method, yes. Horizontal plane of symmetry is also called as folding method. Find the resistance between A and B if each resistance is capital R. आरएन कैसे करते थे? हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले सर्किट. लॉजिक क्या था? सर याद नहीं. सर नीचे वाले को ऊपर लेके जाएंगे. मैंने रिवीजन करने के लिए बोला था बेटा, इसीलिए यहाँ पर बैटरी लगाते हैं अगर, तो हियर द प्लेन ऑफ सिमेट्री इज अलोंग द बैटरी. प्लेन ऑफ सिमेट्री के अबाउट जो मिरर इमेजेस वाले पॉइंट होते हैं वो सेम पोटेंशियल. सो दिस विल बी एट सेम पोटेंशियल, दीस टू विल बी एट सेम पोटेंशियल. पैरेलल में हो जाएगा सर. इसके अलावा जो ये पॉइंट है इनको हम एक नया पॉइंट अज्यूम कर लेंगे, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4, एंड देन वी ड्रॉ दिस सर्किट. This plane, horizontal plane of symmetry, is considered as a mirror, and the mirror image points are at same potential.
सो इसके ऊपर और नीचे वाले दोनों साइड के पॉइंट सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे विद यस सर। रिवीजन किया है? नहीं, क्या आएगा इसका आंसर? ए बी एट द एंड्स। सर एक मिनट। सो ये जो जब तीनों आते हैं तो सीरीज पे होंगे। हमें सर्किट बना के चेक करना पड़ेगा, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। सर 5 आर। 5 आर। ए और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 1 और 3 के बीच में देयर आर 2 रेजिस्टर्स, ए और 1 के बीच में देयर आर 2 रेजिस्टर्स, 1 and 2 there are 2 resistors, एक ऊपर और एक नीचे। 2 and 4 there are 2 resistors, 4 and B there is 1 resistor, and 2 and B there are 2 resistors. This becomes the circuit. कितना है आंसर? Sir, 5/4 R. 5/4। Yes, sir, वही आ रहा है। Yes, please confirm. यस सर 5R/4। 5R/4, okay. R and R it become R/2 plus R 3R/2, 3R/2 and R/2. So 3R/8, 3R/4 plus R/2. 5R/4, right? With it? यस सर। Yeah, अभी नहीं सर। क्या हो गया है? Okay. So R and R R/2 plus R 3R/2, 3R/2, R and R in parallel.
कितना 3r by 8 सिंपल Yeah, सर्किट by है 3r by 8 into 2, 3r by 4 plus r by 2. so 3r by 8 plus r by 2 plus 3r by 8 So first was the vertical plane of symmetry, second is the horizontal plane of symmetry, इसी को हम folding method ही बोलते हैं. बेटा आगे 5r by 4, काइली, कुणाल, Yes, Yes, sir. sir. okay. Vidit, got the answer? Yes, sir. तीसरा केस क्या था? थर्ड केस ऑफ सिमेट्री जो हमने वैसे बाद में किया था, नेटवर्क सिमेट्री आल्सो रिमेंबर व्हाट वाज द नेटवर्क सिमेट्री परिधि परिधि A group of circuits. हाँ So, मतलब this का similar in when current gets divided into different branches if each network is same जैसे हमने इसको जब कैपेसिटर में कैलकुलेट किया था between the void diagonal we use the Kirchhoff's law but अभी because हमने network symmetry identify कर ली थी and we can use that network symmetry principle also A point A तक तो सेम ही थे इन तीनों में सेम करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है I so their final potential will be same so we can consider these 3 points at the same potential correct समझ आ Yes, रहा है sir. Yes, sir. Yes, sir. एक ये diagonal वाला Likewise. base वाला था. Likewise, यहाँ पे 3 equal currents will be coming from this network symmetry means same current coming through the same resistor so those points will be at same potential this and this will be at same potential हमने पहले इसको किरचॉफ लॉ से करंट डिस्ट्रीब्यूट करके किया था there is another way of doing it is with the help of Kirchhoff law से भी करेंगे after doing the Kirchhoff law but there is a network symmetry so I'm just summarizing all the type of special cases and with the help of example. So इसमें A to 1 how many resistors? 3. 1 to 2 how many resistors? 1 to 2 how many resistors? So 1 4. to 2. 4. 4. 1 2 3 नहीं 4 नहीं ज्यादा होंगे काउंट करो कितने कितने बच्चे 6 होंगे ना Yes, sir. 1 2 3 4 5 and Yes, 6 sir. 6. 6 resistors तो ये पहला वाला हो गया R by 3 कैपेसिटर में भी ऐसे कर सकते थे ऐसा नहीं कैपेसिटर में नहीं कर सकते थे बट we use that method R by 3 R by 6 and R by 3 all three will be in series so we get how much 5R by 6 5R by 6 right understood symmetry पहली थी vertical plane of symmetry second is horizontal plane of symmetry third is network symmetry एक और हमने किया था diagonal symmetry but that was in Wheatstone bridge so जब Wheatstone bridge करेंगे then we will revise that symmetry also and we did one more that was 3D symmetry so 3D symmetry को solve करने का तरीका 3D को 2D circuit में change कर लेते हैं and by that we can solve the circuit so based on the DPP the last DPP that we used we started solving in the class the series and parallel resistors DPP number 4
Okay, so question number 7, that seems is exactly the same question between the body diagonals of cube. Yes. Question number 6 is based on symmetry. 5 हम कर चुके हैं last class में, 5 शायद हम कर चुके हैं. It was the Wheatstone bridge. Question number 6, what is the answer? Question number 6. Yes, what will be answer to question number 6? Question number 6. क्या आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का? Sir, Yes. R by 2. R by 2. R by 2 D. R by 2. Yes, sir. R by 2. Correct. D option. So ये हट जाएगा by symmetry, ऊपर आएगा 2R parallel में R and R in parallel become R by 2. So based on the symmetry circuit, we have to solve some questions. I think कुछ तो हमने किए थे last class में. 10th मैंने शायद question number 15 is the J question. Question number 15, what will be the answer? We'll apply that vertical symmetry circuit, vertical symmetry, because both sides of these two are will be removed from the circuit. Right? कितना आएगा आंसर? Quick, find the answer of this. First option. A. A. Okay, so this is 2R and 2R, 4R, 4R and 4R in parallel become 2R. So 2 capital R and 2 small r. These two will be in parallel. R1, R2 upon R1 plus R2, first option. We haven't done yet RC circuit, so I don't have to use RC circuit. Okay,
Fine. So these are the type of symmetry circuits that we did in the capacitor. Second case क्या था? Second नहीं third हो गया शायद अभी. Circuits having sorry fourth. Circuits having extra connecting wire. So if circuits have extra connecting wire, all those points connected by wire will be at same potential. So we will assume them as same point in the circuit. We'll number them as same point. And then when we redraw the circuit, we will identify where each of the resistor is located. Find the equivalent resistance between A and B. So this point is connected here to A. This is 1 and 1. कितना आएगा आंसर? Yes, we'll redraw the circuit taking A and B at the end and A in between. Parallel resistance R between A and 1. Then there are two R in series between A and 1. And then there are two R in between A and 1. And then there is a R between 1 and B. Right? What is the resultant? What is the equivalent? R equivalent R plus R 2R, 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 R. 3R by 5. Huh? 3R by 5. 3R by 5. Please check. और किसी का भी 3R by 5 आ रहा है? Yes. With it, Yes, sir. what is the answer between A and B? तुम सॉल्व कर रहे हो कुछ और कर रहे हो? विदित, सर एक मिनट ये मैं पूछ रहा हूँ. So 3R by 2. So 3R by 2 नहीं आ गया. 3R by 2 देखने में 3R by 2 लग रहा है. Yes, sir. 3R by 2. Are you involved in something else? R by 4. 2R and 2R, R and R in parallel, R by 2, R by 2 के साथ R सीरीज में 3R by 2. हम्म. 3R by 2 से कैसे उसमें सर 3R by 4 आ रहा है. R by 2 R by 2 और R सीरीज में 2R पैरेलल में आ गए R और R पैरेलल में R by 2. अच्छा इस अच्छा R by ओके 2 के सर साथ R सीरीज में. ओके सर. So there are a few questions based on this in the DPP. Question number 13. Ammeter reading means we have to find the current, and current means we can find out the I by V or V by R equivalent. First calculate the R equivalent of this resistance, this circuit. Question number 13, calculate the R equivalent first. Yes. करना क्या है? इधर A, इधर B. The point which are connected by wire will be at same potential, so this will become A.
and similarly here it will become B. बीच में 1 और 2 कर लेते हैं. Draw the circuit again. What is the answer? Yes. यार तुम लोग इतना टाइम लगाओगे तो फिर तो अदर बैचेस में क्या होगा? Kylie, what is the answer? Kylie? क्या हुआ? सेम फिगर दिखाना तुम्हारा उसमें नोट. Okay. R equivalent बताओ, एमिटर रीडिंग छोड़ देते हैं, पहले R equivalent कितना आया? What is the equivalent resistance of this? बेटा आया किसी का? सर इसकी ए और 1 जो वर्टिकल वाला है इसकी रीडिंग क्या है, क्या रेजिस्टेंस है इसकी? कि रेजिस्टेंस क्या है? हाँ, जो वर्टिकल वाला ए और 1 के बीच वाला. सर R equivalent 20/9. Okay. R equivalent कितना आ रहा है? विदित? सर मेरा सर 94/7 आ रहा है. एक बार दोबारा कर रहा हूँ. सर एक सेकंड, इसमें रीडिंग को मुझे थोड़ा डाउट है, जो रेजिस्टेंस दे रखी है. तो इस वैल्यू में डाउट है. मतलब बस जो दे रखा है बी और 1 के बीच में 2 ओम और 6 4 में ओम लग रहा है नीचे. वैसे तो. अच्छा, one resistance is missing. Yes. यस सर. I'll just check and I'll confirm from the book what is the. और जो ऊपर वाला 2 ओम और 4 ओम नीचे ऊपर नीचे लिखा हुआ है, तो उसमें से कौन सा वैल्यू लेना है पूछ रहा हूँ. I think this 4 is for this 4 is for this और ये 6 हो गया. Okay. तो भी मैं एक बार चेक करके कंफर्म कर देता हूँ. सर that yes sir, वही केस है. हाँ बेटा. सर वही केस है क्योंकि उस रेजिस्टेंस पे 2 बार रेजिस्टेंस दे रखी है, तो 4 इसके लिए हो जाएगा. So ये 4 और 4 क्या सोचते नहीं, क्या कह रहे हो? सर एक रेजिस्टेंस के ऊपर 2 रेजिस्टेंस दे रखा है ना, 2 ओम और 4 ओम, तो जो मिसिंग वाला है उस पे 4 ओम कंसीडर कर सकते हैं. हाँ वो नीचे 4 वाला. में होगा. Yes. यस. 4 and 4. Draw the circuit again. A and B. 1 and 2. ऊपर 1 और नीचे 2. Between A and 1 resistance. Between A and 1 2 resistance. Between A and 2 this is 4 ohm and 4 ohm. Between A and 2 2 ohm. Between 1 to B is 2 ohm.
between B to 2, 6 ohm and 6 ohm. That is your whole circuit. Simple, sir. Understood the circuit? 20/9 ही आ रहा है मेरा भी रेजिस्टेंस 20 by 19 आएगा 4 and 20 by 4 2 9 20 2 by and 2 9 4 20/9 20 by 9, right? Okay, yes, it will be 20 by 9 and total potential is how much? This is 2 volt and this is 12 volt, so total is 14 volt divided by 20 by 9. See, none of the option is matching. वो थोड़ा आंसर में कुछ और सर्किट लिया हुआ है, कोई बात नहीं, आपको इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए यही करना है. Points numbered connected by wire should be numbered as same point. They draw this circuit, find R equivalent, and then current I will be equal to V by R equivalent. सर 27/5 Yes. 27/5 ammeter reader Okay, fine. और एक हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन कर लिया था शायद, just once more अगर डाउट है तो. Question number 9 is also based on the same logic. Points connected by wires will be at same potential. Question number 9, I think we did last class. से करना है क्या अभी? ये Question 9 तो 9 किया करना था हमने, 9 किया हुआ है, अगर नहीं किया तो कर लो. 9 we have done last class. Done? Okay. Next type of circuit that we did last class, in the capacitor circuit, not the last class. Circuits having extra connecting wire. Next was open terminal short circuit, which is also the same thing. Short circuit and open circuit. Short circuit का मतलब when ends are connected together. Open circuit when ends are not connected. One end is connected, but the other end is not connected. Yes, R can be equal to how much? 2R? 2R. Because this R and R will be short circuited, they are at the same terminals between the same potential, so they will be removed. There will not be any current passing into the circuit. Open circuit के लिए हमने कुछ ऐसा circuit पढ़ा था. This is a similar example as we did for capacitor. So there are 4 terminals of the circuit, and we have to connect battery only between the 2 terminals. Obviously, 2 of them will be left hanging in air, and those ends of the capacitor will not have any current. Right? so ये वाला एक बार याद कराना, ये कुछ infinite करके दिया था आपने. नहीं, ये इनफाइनाइट वाला नहीं है, ये तो फाइनाइट वाला ही है, बट ओपन सर्किट है ये. दिस इज नॉट इनफाइनाइट. इनफाइनाइट अलग केस था. इसमें 4 टर्मिनल्स थे किसी नेटवर्क के, हम बैटरीज में लगाएंगे, उसके अलावा जो बाकी 2 हवा में रहेंगे उनको हम हटा देंगे. राइट? yes sir.
Okay. So क्या आएगा आंसर वैसे रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी what will be the resistance between A and C and what is the resistance between A and D? Use the same logic as we used for the capacitor circuit. सर AC के बीच में 11/4 आ रहा है। A और C के बीच में कितना आएगा? R, this will become 3R by 4, 3R by 4 plus 2R, 11R by 4, right? Yes, sir. And between AD, yes, between A and D, So मुझे ये वाला समझ नहीं आया, बस समझा रहा हूँ। कौन सा A और C? नहीं ये ओपन सर्किट वाला। ये एक सर्किट है जिसमें 4 टर्मिनल, दिस इज पार्ट ऑफ सम नेटवर्क। हमने जहां पे बैटरी लगानी है, बैटरी के 2 ही टर्मिनल होते हैं, हम या तो एक 2 पॉइंट में लगाएंगे बिटवीन एनी टू, यस सर। A, B, C and D. So if battery is connected between A and C, करंट यहाँ से जाएगी, this will not go in these terminals क्योंकि इसके across दूसरे दिन पे ये open है. It is not connected to any part of the circuit, so current cannot go. You can just remove these 2 resistors from the circuit because they will not draw any current. Current cannot enter and then disappear. Current has to come back to the circuit also. So this become effective circuit when we are calculating between A and C. The resistors connected to the terminal of B and D will not draw any current from the circuit. Right? Yes sir, understood. Very nice. Similarly, resistance between A and C. Between A and C, this was the circuit. This is not an infinite ladder. This is just between A and C, B. So now we are calculating between A and D. So now what happens? Sorry, this is the same case. Now we will remove these 2 resistors. One is from C and one is from B. R and R in series 2R, R and R in series 2R, 2R and 2R will become R. So R and R and R in series, it become 3R. Right?
Understood? This is 2R, this is 2R, 2R, 2R become R, and then R and R and R will be in series, that become 3S. So this was the open circuit, short circuit, and then we did सर in अगर नंबरिंग से करेंगे इसको तो ये वाले क्यों करेंगे? नंबरिंग नहीं करेंगे ना, ये सब तो अलग अलग है, कोई भी किसी वायर से कनेक्टेड नहीं है ना। तो करोगे तो ये 1 हो गया, ये 2, there is no connecting wire. Each wire is a resistor only. यस सर Fine. Next is the infinite ladder circuit, review number 5, 6. Infinite ladder case. Infinite ladder, when the same step is repeated till infinity, we use the fact that infinity minus 1 is infinity, so we can remove one of those ladder and jump to the second ladder following the same sequence. The resistance of infinity and resistance of infinity minus 1 will be same. So we're starting from AB, R to R, R to R. We can jump to the second ladder. Still the overall resistance will be same. So from AB, if we jump to PQ, let equivalent resistance between point A and B is R equivalent. So equivalent resistance between P and Q, that will also become R equivalent. So we can replace that whole circuit beyond P and Q, and we will substitute its value. The value of resistance between P and Q. Now 2R and R equivalent in parallel, and this is in series with R. 2R into R equivalent divided by 2R plus R equivalent. This is in series with R, and that becomes the resistance of between A and B, which is also R equivalent. Yes, solve this quadratic equation. What is the value of R equivalent?
बेटा क्या है आंसर, इसकी क्वाड्रिकेशन सॉल्व करो। 2r into r equivalent divided by so if we solve this 2r times r equivalent plus r into 2r plus r equivalent, take the LCM, sorry, plus is equal to r equivalent into 2r plus r equivalent. Right? समझ तो आ गया ना क्या किया? We replace the whole circuit beyond P and Q, substitute its value. That value is R equivalent to R के साथ parallel में और फिर R के साथ series. So this will give R equivalent square plus 2R into R equivalent. इधर ये आ जाएगा 3R into R equivalent plus 2R square. So R equivalent square minus R into R equivalent minus 2R square is equal to 0. इसकी रूट की इक्वेशन लगाओगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac divided by 2 which is r plus minus 3r divided by 2, so it will come 2r. Equivalent resistance 2r. Clear answer? क्या कोई सॉल्व नहीं कर रहा है? Very nice. बताइए आंसर आ रहा है किसी का? बोल क्यों नहीं रहे यार? R equivalent is 2r. Is it correct? Yes, sir. इन्फिनिटी में हमने कुछ 2-3 केसेस और किए थे। एक तो ये केस था, दूसरा था अगर हम लास्ट में इफ सपोज थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, अनदर एग्जांपल, अगर सपोज हम ये सर्किट ऐसा ले लें जिसमें ईच रेजिस्टेंस इज circuit is exactly same, but every time the resistance is half of its previous value in every ladder. जैसे first ladder में each resistance is R R R, second ladder में R by 2 R by 2 R by 2, third ladder में R by 4 R by 4 R by 4, and then R by 8 R by 8 R by 8, and this is going till infinity when it is connected between A and B. Find the equivalent resistance between A and B. So थोड़ा सा इसमें हम different strategy use करते हैं. Equivalent resistance between A and B we can calculate how. A और B के बीच में resistance R से start हो रहा है. अभी आप भूल जाओ कि हम A और B से start कर रहे हैं. We are starting from suppose the second ladder. So first ladder पे अगर हम start करके resistance calculate करते हैं, that resistance is R equivalent. Equivalent resistance between A and B is R equivalent. So A, P और Q के बीच में जो resistance होगा, circuit is similar, but since we are starting with each value as half of the value from AB, so इसके जो resistance होगा उसमें half का factor अगर हम बाहर निकाल लें, that will become same. The equivalent resistance between P and Q across P and Q will be exactly same as A and P, but half of it because each value of resistor is half of the previous. A B से जो ladder start हो रहा था वो R फिर R by 2 फिर R by 4.
P और Q से लेटर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज R by 2, R by 4, R by 8. So अगर A और B के बीच का रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, P और Q के बीच का इक्विवेलेंट होगा R इक्विवेलेंट by 2. मेथड इज सेम, हम आगे का पूरा सर्किट हटा देंगे. बेटा ये लॉजिक क्लियर हो गया? क्यों इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू हाफ है? बिकॉज द लैडर इज नॉट सेम, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस बिकम्स हाफ. सो अगर हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू हाफ हो गई, इसका मतलब इक्विवेलेंट की वैल्यू भी पहले वाले इक्विवेलेंट से टोटल एग्जैक्टली हाफ हो जाएगी. Circuit between A and B and between P and Q connection wise same. Numerical value of each resistor is half. Therefore, equivalent resistance will also become half. So when we replace that circuit between P and Q, we will replace that by R equivalent by 2, not exactly by R equivalent. So simplify the circuit. The resistance between P and Q, the resistance between P and Q will be replaced by R equivalent by 2. This becomes R, R and R, and limit from A to B. R equivalent by 2 and R in parallel, these two are in parallel, and then it will be in series with R and R. बेटा ये समझ में आ रहा why it is half? किसी को Yeah. डाउट? A और B के बीच का जो रेजिस्टेंस है, P और Q के बीच में रेजिस्टेंस, it will become exactly half of it, and the reason is because the each resistance value has become half of its initial value. अब इसको फिर से बना लेते हैं. R equivalent R into R equivalent by 2, R1 R2 divided by R1 plus R2, ये इन दोनों का पैरेलल में हो गया, plus R, this should be equal to R equivalent. Solve this quadratic equation and find the value. What is the answer? What is the value of R equivalent for this? Yes. बेटा इसको सॉल्व करके आंसर बताना है. आई एम वेटिंग. कर रहा हूँ एक second.
बेटा आया किसी का आंसर? ऐश्वर्या? 2 मिनट्स कर रहे हैं। सर आपका क्या आंसर आया? मेरा तो कुछ नहीं है, आप बताओगे, मैं वेरीफाई करता हूँ। सॉल्विंग अजीब आप सा आ देखो रहा है कितना सर, अजीब सा आ रहा है काफी। यस सर। अजीब सा सर आ रहा है। 1 प्लस माइनस रूट माइनस 15 आर स्क्वायर अपॉन, ये मेरा आ रहा है। R into R equivalent divided by 2R plus R equivalent plus 2R is equal to R equivalent. R into R equivalent plus 2R into 2R plus R equivalent is equal to R equivalent into 2R. कुणाल क्या है आंसर तुम्हारा? कुणाल, यस सर। what is your answer? सर कर रहा था। कर रहे थे। आशुतोष, यस सर। what is your answer? सर अभी कर रहा था। कितना यार टाइम लगाओगे एक छोटा सा क्वेश्चन करने में? बी स्क्वायर माइनस, अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया शायद। ये क्या है? सर तो रियल माइनस रूट 4 है, आर स्क्वायर होना चाहिए। माइनस होना चाहिए ना? हाँ ठीक है, यस सॉरी, ये इधर 4 है, ये माइनस होना चाहिए, राइट। सो फिर ये बन गया 16 डिवाइडेड बाय 2, सो 1 प्लस रूट 17 टाइम्स r by 2, दैट इज द आंसर। भैया यस सर, यही आया मेरा अभी। ये करेक्ट है। राइट, ओके। सो ये तो एक हमने ऐसा और क्वेश्चन किया था इन द इनफिनिट लैडर, व्हाट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी पुट एट द लास्ट so that the number of ladders in between become irrelevant. ये बीच में बहुत सारे ladders हैं till infinity. Between A and B, R to R and R, R to R and R, R to R and R. R to R, and this is unknown. What should be the value of X so that, what should be the value of resistance X so that equivalent resistance does not depend upon the number of loops. Equivalent resistance does not depend upon number of loops. क्या था इसका लॉजिक? इसका लॉजिक ये था कि हम x रखने के बाद अगर एक कंप्लीट लूप सॉल्व करने पे हमें फिर से x मिल जाता है,
then that means there is no advantage of connecting this loop in between. उस पूरे को हटा सकते हैं. Similarly, every time if it becomes x after solving one complete loop, that means that loop is irrelevant. The equivalent resistance will not depend upon number of loops. उसमें आप सीधे ही R और X लगा दो. This resistance will be exactly same as taking only R and X. आगे हम कितने भी लूप लगाते जा रहे हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा. That should be exactly immaterial because the number of loops each loop will come to exactly same resistance as we connected at the end. So सबसे लास्ट में suppose हमने x लगाया, x and r plus 2r. X, r and r, चल r है. By symmetry, this is the resistance. So r, x and r, these will be in series, which is in parallel with 2r. So there will be r, x और r ये सीरीज में हो जाएंगे और इसके साथ पैरेलल में 2r. So this becomes 2r plus x and in parallel with 2r, and this should be equal to x. The resistance of each ladder should become x again. R1 into R2 divided by R1 plus R2 is equal to x. राइट, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं. 4r square plus 2rx is equal to x into x plus 4r. X square plus 2rx minus 4r square is 0. Solve this for value of x. Solve for value of x. Yes, what's the value of x? Minus b plus minus, so b square minus 4ac. कितना 20? 20r square upon 2. So it cannot be negative. So it will be how much? Root 5 minus 1. Root 5 minus 1 times r. सर -2 नहीं होगा. हाँ बेटा. सर -1 होना चाहिए. -1 plus minus root of 20r square upon 2. ये इधर 4rx था, इधर 2rx था. सर मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x square plus 2rx minus 4r square. हाँ तो वही तो मेरी भी आई है. x square plus 2rx minus 4r square. अच्छा हाँ, यस सर, मैंने गलत सुन दिया. यस सर. यस सर, सही है. So ये आ जाएगा फाइनल आंसर x is equal to root 5 minus 1 times r. If we add this value exactly at the last resistor, then the number of loops in between does not matter.
चाहे आप सीधे एक x लगा दो r के साथ या with all these loops it will be exactly same. Right? Understood everyone? Yes. Aryan? Yes, sir. फाइन. सो ये इनफाइनाइट एडर वाले केसेस हो गए. इसमें एक थोड़ा सा और अच्छा सा क्वेश्चन है इन दी क्रोटोव. इनफैक्ट इरोडोव में भी है. Each wire has a resistance. A wire has a resistance R per unit length. और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल. And similarly this is going till infinity. Right? This is a question from Krotov. If the ये जो बाहर वाली resistance है, this is length is 1 meter. If the resistance of wire per unit length is R. For another capital R, find the equivalent resistance between A and B. Find equivalent resistance between A and B. So इसमें क्या करेंगे? Is there a plane of symmetry? Is there a plane of symmetry? Yes, there is a plane of symmetry. Plane of symmetry में जो junction है उसको open कर सकते हैं. इसको हम यहाँ से open कर लेते हैं अगर. Now, जैसा circuit A और B के बीच में exactly same circuit is starting from P to Q, but again the thing is that the resistance will be exactly half, because that equivalent resistance, the circuit is starting with half of the length. Half of the length means half of the resistance of the bigger triangle. So if the bigger triangle, each wire has a resistance, each side has a resistance of capital R. The smaller one, each side has a resistance of R by 2. And that means this is, again, if the resistance between A and B is R equivalent resistance between A and B is R equivalent, then equivalent resistance between P and Q will be exactly half. It will be R equivalent by 2. Right? P और Q के बीच में resistance R equivalent by 2 आ गया. इसको हम जंक्शन को यहाँ से ओपन कर लेते हैं. So now when we connect this circuit, ये R by 2 ऊपर वाले पार्ट का, नीचे वाले पार्ट का R by 2 और बीच में लग जाएगा R equivalent by 2 and this is R. Solve this circuit between A and B
और जो इसकी वैल्यू आएगी उसको हम लिख लेंगे R equivalent. The equivalent resistance between P and Q is R equivalent by 2. Resistance between A and B is R equivalent. Resistance between P and Q is R equivalent by 2. Correct? So solve this and next class we'll get the answer. This is सर question. सर एक डाउट, सर बस एक डाउट, ये R/2 क्यों है लेकिन R/2? वही जो लॉजिक यहाँ पे था, सॉरी दिस वन, हमने Yes, स्टार्ट sir, किया था तो रेजिस्टेंस R थे, सेम सर्किट्स बट ईच रेजिस्टेंस इज हाफ, सो हियर आल्सो ईच रेजिस्टेंस इज हाफ, इट विल बिकम R equivalent by 2. Exactly ditto same circuit with each resistance half of the initial circuit. So if resistance is becoming to half, then it will be equivalent will also be half. Right? Yes, sir. Okay, we'll continue next class. इसको आप solve कर लेना. ठीक है? चलो. Okay, thank you. Thank you. Please revise the capacitor notes